Welcome once again to my class Learning Point with DK. And today, as I have told you and promised you in the last class that I will discuss about the question answer of part 1 of chapter 2, the sound of music. And let's start. So see here, first of all, I want to just have a recapitulation of this story. This is the story about a completely deaf girl named Evelyn Glennie, and she in the beginning was not a deaf girl, but slowly she lost her hearing capacity due to her nerve damage gradually. And then she was taken to a special school where she saw a girl who was playing the xylophone, and she had a keen interest to be a music composer. When she told about this to the people like family members, relatives, and the school teachers, classmates, they all laughed at except one person, that Ron Fox. Ron Fox was the school music teacher who recognized her talent and asked her to listen the higher drum and lower drum notes. And she was able to do so some other ways, as the teacher Ron Fox asked her, don't listen through her ear but some other way. Sense it some other way. And she did it, and she got to know that she could identify the two sounds, higher drum and lower drum notes, through her other ways. And that is higher drums up from the waist and lower drums down from the waist. Then she actually found this one and doing the practice every day. And after that, what happened? She wanted to get the admission in Royal Academy of Music in London, and that was she auditioned for that. She had the many orchestral performances, then solo performances, and after that, she got the admission in Royal Academy as well. So this is how she had the gradual and then after that very fast improvement. See, when she got the admission in the Royal Academy of Music, she won many awards and many prizes, and so she was very famous and popular. She had very hectic schedule of international stage performances. So this is how we have come to know about her challenges and her success. Then an interviewer came to her and to our discussion, and after that the interviewer came to know she was amazingly able to express and understand others' thoughts and ideas without listening anyone. Then the interviewer asked her how she could understand all the languages, even the languages that time she lost her listening, she did not listen or did not hear ever, and those languages were French and basic Japanese. However, she was able to understand those languages. Fine. So ultimately, she proved herself that being a handicapped person, even if anyone dedicated to one thing, could get. And that is how she opened the door for those people who are handicapped or differently abled. Now see here the major characters, like we have the Evelyn Glennie. I told you Evelyn Glennie, the mother of Evelyn Glennie, the Ron Fox, the music teacher of a school teacher of Evelyn Glennie, who actually recognized her talent, and that's why she was a successful music composer in the world. Then James Blade, who talk about her, that she lost her listening capacity, and that God took her from her listening capacity, but given her a unique talent which is rare in the world and which is amazing, magical, incredible, and so on. Then Anne Ruchlin, who is the caretaker of Beethoven Fund for deaf children, and what he actually told about her is she actually is like a lighthouse, like a person who showed a path to those who are handicapped, and also gave millions people lots of pleasure by her on music. So this is a short you can say recapitulation of the whole chapter. Let's now discuss about important questions. How did Evelyn Glennie lose her hearing? So I told you at the age of 8, she was waiting for her turn to play her piano. At that time, Mother Isabel Glennie called her name, but she did not listen this or show any movement, and then it was understood by the mother.
somewhere she was not having the capacity to listen or losing her listening capacity. Then we have the next question here. See what I have written here. This is what? Here, due to gradual nerve damage, Evelyn Glennie lost her hearing. And then when was it noticed that she had hearing impairment? So this is what? It was the turn for Evelyn Glennie to play a piano. See, she was waiting for her turn to play a piano, and at that time, mother called her name. She screamed her name, shouted her name, but she did not listen. And at that time, she understood somewhere she had the problem of listening. And then you see after that, where did she audition to learn music? Where did she audition to learn music? And she auditioned at the Royal Academy of Music in London. So in the first para where I told you she was waiting at the underground platform, railway platform, to go to London, where she could get the admission in the Royal Academy of Music. I hope you are getting this one. So now next question is, how was she taught to learn music? So definitely this was also mentioned about Ron Fox. You can say at the third place, Ron Fox, the school music teacher or percussionist, and he was the person in the school who only supported her and recognized her talent, and after that asked her to listen the two higher and lower notes, and that's how asked her don't listen through her ears but some other ways, since it's some other ways, and she did it and understood, and she recognized herself that she could understand the music of vibrations. So now I hope you have understood this answer also. How was she taught to learn music? And she was taught music by the help of first of all Ron Fox, and later herself when she recognized it, so she could listen it through her sole of the feet. When she used to put her leg or the feet on the stage, so she could listen or sense the music vibration through her feet, sole of the feet. Then through her cheekbones, through her even hair. And this is how she could also read the lips, that is lip reading she knew. And these are the things by which she could understand music, and then she was able to learn music. I hope today you have understood all these things. I am going to tell you all these things in Hindi. See, the first question. अब मैं हिंदी में बताऊंगा आपको. देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये एवलिन ग्लेनी जिसके ही इर्द गिर्द घूमता है, यानी मूविंग अराउंड हर. और एवलिन ग्लेनी जो है एक ऐसा कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है, जिसको ये समस्या है कि वो धीरे धीरे अपनी लिसनिंग कैपेसिटी खो देती है. उसकी माँ जो है इजबेल ग्लेनी, जब वो पियानो है उसके बजाने का उसका वेट कर रही थी, और मदर उसका नाम लेती है इवेलिन ग्लेनी, बट वो एक बार भी जो है कि उस पर ध्यान नहीं देती है. इससे इजबेल ग्लेनी जो मदर है इवेलिन ग्लेनी की, वो समझ जाती है कि उसे कुछ सुनने की समस्या है, प्रॉब्लम है, बट वो उसको हाइड कर लेती है एवलिन ग्लेनी जब तक कि वो 11 साल की नहीं हो जाती है, और उसको बार बार वो अपने एग्जाम में खराब मार्क्स लाने लगती है, बहुत ही बदतर मार्क्स आने लगते हैं. इससे क्या होता है कि अब वहाँ के जो हेडमिस्ट्रेस है वो समझ जाती है कि कहीं न कहीं उसे सुनने की समस्या है, और इसलिए उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है स्कूल में, और उनको यह सजेशन दिया जाता है कि आप इसको कृपया करके एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए और इसका एडमिशन एक खास विशेष यानी स्पेशल स्कूल में कराइए. जब इतनी सारी चीजें हो जाती हैं तब एवलिन ग्लेनी को एक स्पेशल स्कूल में एडमिशन हो जाता है. उस स्पेशल स्कूल में वो नहीं चाहती है कि एक हैंडीकैप्ड स्टूडेंट की तरह वो लाइफ जिए, वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है. वो अपने आप से प्रॉमिस करती है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी, और वह एक दिन एक बच्ची को, एक लड़की को स्कूल में ही जो कि जाइलोफोन बजा रही है, वह देखकर वो भी चाहती है कि वो जाइलोफोन बजाए. बट होता क्या है कि जब ये सारी बातें अपनी ये जो की एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, जब वो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने क्लासमेट्स को, अपने पेरेंट्स को बताती है, तो वो सारे लोग जो है उसको कहते हैं कि देखो ये तुमको कर रही हो पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारे लोग तो उस पर हंसते भी हैं. बट उन्हीं में एक स्कूल का म्यूजिक टीचर जो है वो बोलता है कि तुम देखो मैं एक जो है ड्रम बजा रहा हूँ, और वो जो है कि हायर नोट्स और लोअर नोट्स जो है कि प्ले करता है, जिसको एवलिन ग्लेनी जो सुनती है और उसको रिकॉग्नाइज करती है. उसमें रॉन फॉक्स बोलता है कि देखो तुमको जो सुनना है वो कानों से नहीं सुनना है, तुम कोशिश करो कुछ अलग तरीके से, कोई अलग माध्यम से उसे सुनने की कोशिश करो. जब एवलिन ग्लेनी इस चीज को समझती है और कोशिश करती है तो वो सुनना
शुरू करती है और उसे समझ में आता है, और इसके बाद वो पाती है कि जो उसके वेस्ट कमर के ऊपर जो है वाइब्रेशन, हाई ड्रम जो है वाइब्रेशन वो कमर के ऊपर, और लोअर जो ड्रम यानी लोअर ड्रम नोट से वो कमर के नीचे वो सुन सकती है। फिर उसके बाद वो जो है कि और दो तरीके हैं उसे सुनने की, जैसे कि वो लिप रीडिंग कर, जो लोगों के लिप रीड को वो कर सकती है, यानी लिप रीडिंग वो जानती है। फिर जो है कि वो और क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे कि उसके हेयर से भी अगर वाइब्रेशन गुजरता है म्यूजिक का तो उसको वो सेंस कर सकती है। किसी के चिक बोन्स जो है, उसके चिक बोन से भी वाइब्रेशन म्यूजिक के जाते हैं तो उसे वो फील कर सकती है। और उसके जो सोल है, सोल जब म्यूजिक वो स्टेज पर पहुंचती है और म्यूजिक वाइब्रेशन होता है तो उसके थ्रू उसके सेंस वो अपने सोल से भी अपने बॉडी में वाइब्रेशन को, म्यूजिक के वाइब्रेशन को फील कर सकती है। तो इन सारे माध्यम से, इन सारे मीडियम से शी वॉज एबल टू लिसन एंड अंडरस्टैंड म्यूजिक, द वाइब्रेशन म्यूजिक, और ये उसकी क्या है, यूएसपी है। तो आई होप कि आपको इतना जो है अच्छे से समझ गया होगा। अब ये चीजें इंटरव्यूअर के बारे में, कि इंटरव्यूअर आता है और 2 घंटे का डिस्कशन उससे करता है, वो अपने सक्सेस के बारे में बताती है कि वो सक्सेसफुल कैसे हुई, उसके सक्सेस के पीछे का मेन जो उसका मिस्ट्री और हिस्ट्री और जो भी है वो बोलती है उसका वर्कहोलिक होना, मतलब कि अपने काम की ओर पूरी तरह से डेडिकेटेड, सिर्फ काम और सिर्फ काम ही उसे करना है। तो इस तरह से देखा जाए तो वो हमेशा कोशिश करती है कि वो काम करे और काम ही एक तरफ करे और एक ही चीज पर करे। अब वो बोलती है कोई बहुत मैजिकल चीज नहीं है, कोई इनक्रेडिबल चीज नहीं है, कोई भी कर सकता है अगर कोई अपनी एक चीज की ओर, एक काम की ओर ध्यान दे। इस तरह से वो सक्सेस उसको मिला है और उसके लिए वो किसी को क्रेडिट दे सकती है पर खुद को नहीं। और ये उसकी क्या है, महानता है, ग्रेटनेस है। अब क्या है, तो वो एक महान एक म्यूजिक कंपोजर तो है ही, और थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स शी लर्न टू प्ले, मतलब हजारों संख्या में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजाना सीख जाती है। और उसके अलावा उसको प्राइज मिलते हैं, वो इंटरनेशनल और शुरू में क्या करती है, ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंसेस देती है, यानी कि डांसर सिंगर सबके साथ मिलकर। बाद में सोलो परफॉर्मेंस यानी अकेले परफॉर्म करती है। और उसके बाद जब उसके बहुत से नाम हो जाते हैं तो उसके पास बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल होता है इंटरनेशनल स्टेज परफॉर्मेंस के। अब उसके जो इंटरव्यूअर है वो उसे पूछता कि वो इतनी सारी चीजें कैसे कर पाई, और जब वो सीख रही थी, मतलब जब वो सीख रही थी उस समय तो उसका पूरी तरह से सुन नहीं सकती थी। तो वो पूरे 2 घंटे के डिस्कशन में वो पाता है इंटरव्यूअर कि वो पूरी तरह से हर चीज समझ सकती है, लिप रीडिंग कर सकती है, और किसी का अगर चेहरे पर बुशी बेयर्ड है तो उसके अलावा होते हुए भी, बुशी बेयर्ड मतलब कि बड़े बड़े उसके मोछ है, दाढ़ी है, और उस बीच में उसके होंठ जो छिप जाते हैं बोलने वाले के, फिर भी वो उसको समझ सकती है। ये भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था उसके लिए, इंटरव्यूअर के लिए। फिर वो बताती है कि देखो मैं जो म्यूजिक का जो वाइब्रेशन है, जो तरंगे होती है, उसे मैं अपने शरीर के जो स्किन है, हेयर है, या जो लिप रीडिंग है, या चिक बोन्स है, इन सब चीजों के थ्रू वो अंडरस्टैंड कर पाती है और फील कर पाती है। इसीलिए जो जेम्स ब्लेड्स नाम का एक बहुत ही पॉपुलर परक्यूशनिस्ट है, यानी म्यूजिक कंपोजर उस समय का, वो भी बोलता है उसके बारे में कि भगवान ने उससे तो एक चीज ले ली, उसकी सुनने की कैपेसिटी, लेकिन हम लोगों से कहीं ज्यादा म्यूजिक को बिना सुने ही समझने की कैपेसिटी उसे दी है। और एक और आदमी एन रिचलिन, जो कि बीथोवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन का वो भी जो है कि ऑनर है या केयर टेकर भी हम कह सकते हैं, और वो उसके बारे में बोलता है कि देखो ये जो लड़की है उसने अपने इस कम उम्र में, यानी कि इतने कम उम्र में, ये जितने उम्र में उसने जो सक्सेस किया है, किसी और आदमी के लिए इसके तो 2 गुना समय लगेगा, यानी कि 2 गुना उम्र लगेगा इतना सक्सेस प्राप्त करने के लिए। और इस लड़की ने करोड़ों, हजारों, लाखों जो हैंडीकैप्ड और हम कह सकते हैं डिफरेंट एबल्ड लोग हैं, जिसे मोदी जी कहते हैं दिव्यांग, इन लोगों के बारे में कहा कि उनके लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स है और मोटिवेशन का सोर्स है। ठीक है, इस तरह से क्या हम समझते हैं कि ये जो है सारा का सारा स्टोरी इस लड़की के चारों ओर घूमता है, और इस लड़की ने ये प्रूव करके दिखाया कि आप अगर एक चीज की ओर डेडिकेटेड हो तो आप उसे कर सकते हैं, इवन तो यू आर कम्प्लीटली डेफ और हैंडीकैप्ड। थैंक यू, आई होप कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नए चैप्टर के साथ, नए डिस्कशन के साथ आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।